हेलो डियर फ्रेंड्स संडे एकेडमी आपण मान को स्वागत। आज आम देखा रेलवे एग्जाम्स जो जमी सब एग्जाम आरपीएफ एसआई एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन कांस्टेबल स्टैटिक जीके जीके स्पेशल रे आम देखा हिस्ट्री रो पार्ट 11 है। चलते आज स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 होची व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर एलोरा केव्स राष्ट्रकूट रूलर्स महाबलीपुरम पल्लव रूलर्स खजुराहो चंडेलास आउ एलिफेंटा केव्स होची मयूराइरा। कौन मान आंसर आपनकर डी एलिफेंटा केव्स मयूराइरा हला। कौन लेची द इनकरेक्ट पेयर इज डी एलिफेंट केव्स मयूराइरा। व्हाइल द एलिफेंट केव्स आर इन significant historical site they are not associated with the Mauryanira. They are known for the being built during the Rashtrakuta dynasty. Question number 2 है which among the following kavya of Sanskrit deal with the court integrity of the access to the power of the Chandragupta Maurya है ना। मरीच कर्तिका ऋतु संहार कुमार संभव तापर मुद्रा रक्षकश आंसर कौन आंसर डी हो मुद्रा रक्षकश। ओके the Sanskrit kavya that deals with the court integrity and the Chandragupta Maurya rise to the power Mudra Kasha. This historical drama written by the Vishakadatta recounts the story of the Chandragupta Maurya's actions of the power with the help of his guru and minister Chanakya. Okay. Question number 3 on which of the following system of Hindu philosophy Shankaracharya wrote contemporary in 19th century AD? Sankhya, Vaisheshika, Yoga, Uttara Mimamsa. कौन आंसर बनकर डी उत्तरा मीमांसा। ओके Shankaracharya wrote commentaries in the 19th century AD on the Uttar Mimamsa Vedanta philosophy, which is also known as the Vedanta philosophy. Okay, question number 4. The 8th century tripartite power struggle was among which of the following? Chola, Rashtrakuta, Yadava, Chalukyas, Pallava, Pandyas, Chalos, Cholas, Pandya and Chalukyas, Pandavas and Yadavas. कौन आंसर आपनकर बी। ओके क्वेश्चन नंबर 5 which king started the organization of Kumbh Fair at the Allahabad? हर्षवर्धन, ध्रुवसेन टू नरसिंहवर्मन अकबर। आंसर आपनकर ए हर्षवर्धन। ओके हर्षवर्धन king of 7th century was known for organizing a grand quinquennial gathering at the Holy Conference in the Prague modern day Prayagraj कहउछन्ती। This gathering which involves extensive donations is believed to the origin of the Kumbh Mela tradition. Question number 6 Upanishad are book on politics, philosophy, medicine, social life. Answer कौन आंसर आपनकर बी philosophy। The Upanishad are the collection of the ancient Sanskrit texts primarily found within the Vedas that explore the philosophical and religious ideas of Hinduism. They focus on the concept of such the nature of the reality, the self, and the path to the spiritual liberation. Okay. Question number 7 Who was the first Indian ruler who had territory outside India? Also Chandragupta Maurya, Kanishka, Hubishka. कौन आंसर होगा बी Chandragupta Maurya word answer है। While Ashoka is known for his extensive rule and politics including the spread of Buddhism, Chandragupta Maurya was the first Indian ruler to establish an empire that extended beyond the boundaries of the Indian subcontinent. Chandragupta's empire included territory at present day of Afghanistan, Balochistan and even part of the Persia, making him the first Indian ruler to control land outside of the India. Answer Chandragupta Maurya. Question number 8 Which of the following statement is wrong? Sunga dynasty was founded by the Pushyamitra. Ashoka the great modern king died in 332 BC. Ashoka invented the Kalika in 261 BC. Chandragupta Maurya earned the title of the Liberator. कौन आंसर आपनकर बी
ओके बी कौन देछि ना नो अशोक द ग्रेट डिड नॉट डाई इन 332 BC he died in 332 BC he was the third ruler of modern empire and known for his conservation to Buddhism and his effort to spread religion throughout his empire okay ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଜାଣିଛ ଜାଣିବା क्वेश्चन नंबर 9 which among the following is not correct the capital of the Pandya was Madurai capital of the Cheras was Banchi capital of the Videho kingdom was Mithila capital of Gadwal dynasty Kannauja answer of ଆପଣଙ୍କ D okay એટલે ଲେଖା ହେଇଛି એટલે ପଢି ଦେବେ ହେଲା dynasty Kannauja ହେଲା ଗଦୱାଲ dynasty ଲା Kannauja Question number 10. Who among the following was worshipped during the early Vedic period? Varuna, Indra, Surya, all of them. ये समस्त थिले हैला आंसर डी अब समस्त पूजा पाउतले वरुण इंद्र सूर्य भी पिला माने ये होची सन्या एकेडमी आपला मान सन्या एकेडमी जो YouTube चैनल दक्षिण एडुड क्यूआर कोड दिया छै निश्चित में को स्कैन कोन स्कैन कले आपन बेनिफिट कोन मिलिबो ना आपन जेते सब PDF आपन को मिलिबो ता सेटा आपन को क्लासेस ऊपर इंफॉर्मेशन मिलिबो तणो एबे ही स्कैन कर दियतु पिला माने हमर गोटे ब्रांच स्टार्ट होची ओएस एबे जानछन ओएस बहुत जल्दी एग्जाम हो तणो ओएस मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन बैच जोटे कि ना दिया छै स्मार्ट बैच आपन एडमिशन इंक्वायरी रे आपण ए सटिक डिस्कशन कर परबे प्राइस होची 699 सेमती आशा ओपीएससी एस 2025 फाउंडेशन बैच जोटा कि ऑलरेडी एडमिशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो गलानी आपण माने एडमिशन इंक्वायरी कर परिबे आ आपण नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट अछि ए समूह टेस्ट यदि आपण माने प्रॉम्प्ट हे गला निसिना बे समूह टेस्ट दियंतु 399 रुपीस ओनली एडमिशन पे इंक्वायरी कर परिबे सेमते ओडिशा फाउंडेशन बैच रे हम पाखरे ओपीएससी ओएसएससी ओडब्ल्यूएसएससी एसएससी रेलवे जेकुनो एग्जाम आपण प्रिपेयर करछोंदी गोटे थरो कोचिंग नियतु आपण जेकुनो जोटे एग्जाम का करबार गोटे बहुत बड़ कोन कॉन्फिडेंस पाई जिवे हैला आपनकर फाउंडेशन बैच रो ओडिशा फाउंडेशन बैच प्राइस होची 999 लाइब्रेरी यदि आपण जॉइन करना चाहछन निश्चित भाबरे जॉइन कर परिबे भुवनेश्वर सबुठ सस्ता रे 499 रे अवेलेबल होची लाइब्रेरी ओके पिला माने चलन देखा क्वेश्चन नंबर 1 where the hymns of the Rigveda composed Punjab Gujarat Rajasthan Uttar Pradesh आंसर आपनकर ए पंजाब ओके अच्छा से लिखी दीजिए मॉडर्न स्टेट ऑफ द पंजाब लिखी दीजिए एक्सप्लेनेशन डिटेल रे ओके क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्लेस इन लड़खड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान आलमगीरपुर हड़प्पा रंगापुर और मोहिंजोदारो आंसर आपनकर डी मोहिंजोदारो ओके क्वेश्चन नंबर 13 what led to the end of the Indus Valley civilization invasion of the Aryan recurrent floods earthquakes all of the answer आपनकर डी all of the above वाला सब जगह पई Indus Valley civilization कोन लैंड हेला क्वेश्चन नंबर 14 who was the male god worshipped by the Indus people Lord Vishnu Brahma और इंद्र आंसर आपनकर कोन विष्णु हबो हला दिदा का आंसर अछि तनो एटा गोटे चेंज बातला आंसर बापन गोटे विष्णु ओके विष्णु Indus people primarily worshipped a male deity identifies Pasupati also as the proto Shiva okay Lord Vishnu Pasupati भी करते समान है okay answer number question number 15 which empire lasted the longest among the following the Pala the Patihara the Rashtrakuta the Senas आंसर आपण कसी राष्ट्रकूट माने बहुत वर्ष हे करथले कोन एम्पायर तांग थिला तापर असला 16 which of the following statement is wrong Dharmapala was the founder of Pala dynasty Vikramasila university was founded by Dharmapala Bhaju was the founder of the Patihara empire तापर Krishna III was the last राष्ट्रकूट king आंसर आपण कर कोन ए Dharmapala No, Dharmapala was not the founder of the Pala dynasty. Gopala was the founder, and the Dharmapala was his son and successor, known for the expanding the empire. Okay, that important question. Question number 17. Who was the ruler of the kingdom between the rivers Jhelum and the Chena? Alexander the Great, Darius III, King Porus, Chandragupta Maurya. Answer of answer of C. King Porus. Okay. King Porus was the ruler of the kingdom situated between the Jhelum and the Chenab river and he fought against Alexander the Great in the period of Hyperdash.
Question number 18. Who was the last Hindu emperor of the northern India? Harsha, Pulkesin to Rajyavardhana or Skanda Gupta? What answer? A. Harsha. Okay. Harsha was the last Hindu emperor of the northern India. Question number 19. Harihara Raya I, who ruled the Vijayanagara Empire for the period of 1336 to 1356, belonged to which dynasty? Sangama dynasty, Sulaba dynasty, Tuluba dynasty, RRB dynasty. What answer? Sangama dynasty. Okay. Question number 20. Last question. Bimbisara was the founder of which of the following dynasties? Nanda, Hiranyaka, Moira or Sunga? Answer of B. Hiranyaka. Okay. Bimbisara was the founder of the Hiranyaka dynasty. He ruled for the approximately 52 years from 454 to 492 BC. ପିଲାମାନେ ସନ୍ଡେ ଏକାଡେମୀର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଇପାରିବେ। PDF ପାଇପାରିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ, ଡେଲି MCQ ହେଉଛି ପାଇପାରିବେ, କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି OS mock test and discussion batch, ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 699। ବ୍ୟାଚ୍ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଆଡମିସନ୍ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। OPSC ASO ପାଇଁ ଆଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଡମିସନ୍ କରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଖୁସି ASO mock test and discussion ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 399 ରୁପିଜ୍ରେ, ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ଇନକ୍ୱାରୀରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି OPSC, OSSC, OSSC, SSC, ରେଲୱେ। ତା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ 999 ଓନ୍ଲି। ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି 499ରେ। ओके आपण मैंने भुवनेश्वर सस्ता लाइब्रेरी पाइबेन। चलते आम जा क्वेश्चन नंबर 8 चंपा वाज द कैपिटल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया? अंगा, मगध, भज्जी, कसी? यार आंसर निश्चित भाव आपण मैंने कमेंट सेक्शन में दिंतु। और निश्चित भाव में जो मैंने आंसर देवे से गोटे हार्ट और स्माइली सिंबल कमेंट सेक्शन में पाइबे। आ से जानीपारे जे आम आंसर गुड़ा दे पार्चु आम निश्चित भाव ये क्वेश्चन पाइबू, निश्चित भाव आम सक्सेस करूँ। ओके पे वीडियो के लगला निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन निजर मतामत जनइबे। आउ बाकी रहा आप चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करदे। ओके आउ बहुत बहुत वीडियो गुड़ा आसपा आप लाइक सब्सक्राइब निश्चित आमको गोटे एनकरेजमेंट मिले। थैंक यू सो मच। Bye.